Today we will discuss about AM demodulators, that is also called AM detection. Means the detection of original signal from the AM modulated signal. In previous lecture we have discussed about AM modulators. In AM modulators, that is a generation of AM wave. We generate the AM wave through message signal or carrier signal by using square law modulator, and second one is switching modulator. Yes, ma'am. Okay. Now today we will discuss about AM demodulate, that is AM detection. That means it is a process of extracting an original message signal from the modulated wave. Means your input as AM modulated wave, you have to extract the original signal from that modulated wave, that is called AM detection or the process of demodulation. Second, the circuit which demodulates the modulated wave is called demodulator. The following demodulators detectors are used for demodulating AM wave. First one is square law demodulator, and second is envelope detector. Now you can see here that is the process of demodulator or detector. Here the AM wave is passing through a detector or demodulator and extracting an original information, that is the process of detection. So for doing so, we are using here square law detector and envelope detector. Now first type is square wave demodulator or square law demodulator, that is used to demodulate or detect the AM wave. Means original signal is generated through square law demodulator. In this modulator, it contains two main components. First one is square law device and second one is low pass filter. Now if you see here the block diagram of square law demodulator, AM wave passing through a square wave device or square law device, that is a non-linear device. Then we get here the output, that is V1, or we can say V of t. I will show you calculations like what is the output of square law device in next slide. That is a calculation of square law demodulator. First one is the standard form of amplitude modulated wave. We have already discussed in previous lectures in amplitude modulation, also in AM modulators. That is a standard wave of amplitude modulated wave. That is V1t is equal to AC 1 plus Ka m of t cos 2 pi fct. Ka as amplitude sensitivity, m of t as message signal, AC as carrier signal amplitude. Second, we also know the relation between the input and output of square law device. Square law device is a non-linear device. Here, that is the output of square law device, that is V2t. Here we gives the input, that is V1t. So V2t, the output of square law. Student, mute yourself, Amit. Output of square law device is V2t, that is equal to K1 V1t. V1t is your amplitude modulated wave plus K2 V1 square t. That is the relationship of square law device between input and output. Are you getting my point? Any Yes, question ma'am. up to this? No, ma'am.
Now you can see here where V1T is the input of the square law device, which is nothing but the amplitude modulated wave, means generation of AM wave, that is V1T. V2T is the output of square law device, and K1 and K2 both are constants. And you know the amplitude modulated wave, that is V1T. Yes, ma'am. Now you can put this value in equation number 1. Yes, ma'am. Substitute the value of V1T in equation number 1. It becomes V2T is equal to K1 AC 1 plus Ka m of t cos 2 pi fct plus K2 AC 1 plus Ka m of t cos 2 pi fct of whole square, because in second term it's V1 square t. So its value is V1 multiply whole square and multiply with K2, that is constant. K1 and K2 both are constants. Now solve this equation. You also know what is the formula of cos square theta? What is the formula of cos square theta? That is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. Okay. Now you can see here that is अगर आप इस bracket को open करोगे, that is whole square, it becomes cos square 2 pi fct, that is equal to 1 plus cos 4 pi fct by 2. Cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. 2 into 2 pi fct is 4 pi fct by 2. Are you getting my point? Yes, ma'am. Also, that is 1 plus Ka m of t whole square. So you have to apply here a plus b whole square, that is 1 plus Ka square m square t plus 2 Ka m of t. Now again, solve this equation. In actual, we have to extract the original information. What is the original information? In the form of message signal or in the form of carrier signal? What is your original information? Ma'am, in the form of message signal. In the form of message signal. That Message means signal. there is no carrier signal. Only message signal should be there, no carrier signal. Now check, that is your original or last equation of V2T, that is the output of square law device. Now tell me, which term is only related to message signal? Ma'am, second term. Second M term, of t. second term is M of also t. contains cos 2 pi fct, that is carrier signal. But we have to Yes. only abstract the message signal. Check all the terms. Ma'am, fifth one. Fifth one is Ma'am, K2 AC square. Ka m of t. That is the message signal term. Okay. Now see here, first equation, it contains AC cos 2 pi fct, that is your carrier signal. Second term also contain carrier signal. Third one is just a DC component, nothing else. ना तो यहाँ पे message signal है ना carrier है. Next one is again carrier signal. In this m square t, तो message signal भी नहीं है, square हो रहा है. In this again carrier signal is there. यहाँ पे only message signal है. In last term again carrier signal is present. Okay, तो message signal कौन सा है अकेला? K2 AC square Ka m of t, that is your message signal. अब इन सारी इक्वेशंस, ये देखो कितने टर्म्स है, 8 terms are there. How Yes, to ma'am. extract the message signal? By using square law demodulator. How you can extract? I'm using low pass. Using low Filter. pass filter. Low pass filter क्या करेगा? That is your required signal, वो उसे पास कर देगा लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को, बाकी सभी रिजेक्ट हो जाएंगे. हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट वो पास ही नहीं करेगा. एंड कैरियर एज योर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल. तो जितने भी रिक्वायर्ड नहीं है, अनवांटेड सिग्नल है,
that will be eliminated by using with the help of low pass filter. तो आपका required कौन सा है? K2 AC square KAM of T, that is your output of square law demodulator, that is your output of square law demodulator. And second, I'm told you K2 AC square by 2, that is the DC component. It can also be eliminated with the help of coupling capacitor. कि हम आ गए यहाँ पे लो पास फिल्टर पे, यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाते हैं, आरसी फिल्टर सर्किट, तो उसके थ्रू आप डीसी कंपोनेंट को भी एलिमिनेट रिमूव कर सकते हो. दैट इज योर स्केयर लॉ डीमॉड्यूलेटर. Again, I am repeating, demodulator means just the process of extracting the original information, or we can say message signal, through square law demodulator, and second one is through envelope detector, and your input as amplitude modulated wave. That is the opposite process of AM modulator. AM modulator में क्या कर रहे थे आप? With the help of message and carrier, we generate a AM signal. Your requirement is generation of AM wave. Amplitude modulated wave generate कर रहे थे वहाँ पे. But in the AM demodulator, or we can say AM detection, आपने original information extract करनी है किस में से? AM wave में से. अब AM wave में क्या है? It contains carrier signal also and message signal also. Okay. Okay, ma'am. Now second one is envelope detector. That is also used to detect the AM wave. In this, instead of square law device, that is nonlinear device, we are using here diode, simply diode. That is a detecting element. Envelope detector is also called as diode detector. And second component here is a low pass filter. That is a parallel combination of resistor and capacitor. We can also say it a filtration circuit, that is a RC filter circuit. Now see here, the input to the diode is amplitude modulated wave. What is the function of diode here? Any one of you? We have already discussed about switching modulator, in which we use a switching diode. What is the purpose of diode here? Yes. Any one of you? Why we are using diode? मैम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा. Okay. और इन वन डायरेक्शन. और मैम अनवांटेड जो एलिमेंट्स है उसको डिटेक्ट करेगा. अनवांटेड एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेगा. What is the purpose of envelope detector? What is the need of envelope detector? Yes. What is AM demodulator? मैम एक्सट्रैक्ट. हाँ जी. Extract. मैम Yes. मैम ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन रेडियो कैरियर वेव. एएम मॉड्यूलेशन का मैम काम होता है ये कि ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन को विया रेडियो कैरियर वेव में भेजना. I'm asking about AM demodulator. हम जो एएम वेव है उसको जो हमने मॉड्यूलेट की थी उसको रिकवर करना ओरिजिनल. Recover करना. Extract the original message information. यस. Okay. Then what is the purpose of envelope detector? Again, detecting the AM wave यस मैम. and extract and remove the original information through it. यस मैम.
उसमें से AM में क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर एंड मैसेज सिग्नल, that is your baseband signal, but you have to extract only baseband signal out of AM wave. तो आपने AM वेव वहां से डिटेक्ट करके वहां से कौन सा सिग्नल लेना है, मैसेज सिग्नल, दैट इज योर ओरिजिनल सिग्नल. ओके, तो डायोड का क्या काम है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायोड? Non-linear device. It's a non-linear device. Then what is the comparison between square law demodulator and diode? Yes, anyone? Anyone can explain about the square law demodulator? Any one of you? I'm going to backslide. That is square law demodulator. Any one of you can explain it? What is square law demodulator? Yes, Kamal. Kamal. मैम वो स्केल और डिमोडुलेटर that produce output proportional to square of some inputs. Yes. Or how will you extract the original information through square law demodulator? We have done the square law demodulator. Then how will we extract the original information with the help of square law demodulator? जो स्केयर लो डीमॉड्यूलेटर की आउटपुट आती है उसको लो पास फिल्टर से पास करके तो फिर हाँ जी. ओरिजिनल आउटपुट. Pass it through a low pass filter. Then what is the purpose of low pass filter here? हम सिर्फ उसने लो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल है उसको ही पास करना है, जो हाई फ्रिक्वेंसी उसको रिजेक्ट कर देना है. अनवांटेड जो सिग्नल है उसे वो एलिमिनेट कर रहा है. Yes. Okay. Now next is envelope detector. Now tell me, what is the purpose of diode? Yes. मैम डायोड पे हम इनपुट अप्लाइड करते थे V1T. हाँ जी. Any one of you? What is the need of diode in an envelope detector? Why it is called as diode detector? Yes, I am waiting for your response. मैम देन मे बी कैरियर सिग्नल कंट्रोल करता था डायोड कब ऑन होगा और डायोड कब ऑफ होगा. Yes, यहाँ पे क्या होगा अभी? Now your input is AM wave that is passing through this diode. What is the requirement of envelope detector? To extract the original information, that is message signal. यस मैम. मैम Okay. यहाँ पर फिर मैसेज सिग्नल कंट्रोल करेगा. मैसेज सिग्नल तो आपकी आउटपुट है. यस मैम. Yes. नम्रता. हेलो हाँ जी. मैम. Yes. मैम डायोड वाला रिपीट
करना सम नेटवर्क इश्यूज के कारण क्लास लेफ्ट हो गई थी. Okay. Yes, Namrata. Diode. स्विचिंग एक्शन के लिए जी. मैम जैसे ऑन ऑफ डायोड का स्विचिंग एक्शन Switching ही होता हुआ. है. हाँ जी. Diode हाँ here used as a switching device. Now, how this switch will work? All of you aware about the diagram of or graph of amplitude modulated wave? Ma'am, no. मैम Already aware about a amplitude modulated wave or not? Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. Then amplitude modulated wave contains how many components? Amplitude modulated में क्या क्या होता है? हम कैरियर Yes, फ्रीक्वेंसी Carrier signal, message ma'am, wave signal, amplitude. और it contains carrier frequency component, upper sideband, lower sideband. यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Now, diode here act as a rectifier, half wave rectifier. एक डायोड है तो हाफ वेव ही रेक्टिफायर है. Yes, Yes. ma'am. Now tell me what is the function of rectifier? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. Okay, that is the main function of rectifier. And half wave rectifier? Ma'am, only half wave it converts into DC and other one is not. क्लिप हो जाती है Negative सेकंड, one. नेगेटिव हाफ साइकिल जो है Yes. वो क्लिप हो जाता है. Yes. Yes, ma'am. Now अब यहाँ देखो, AM wave is applied as an input to the diode. The diode conducts when it will be forward biased and it will not conduct if it is reverse biased. अगर डायोड रिवर्स बायस्ड में है वो कंडक्ट ही नहीं करेगा. That is a Yes, ma'am. working of half wave rectifier. अगर डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, that means output will be zero. Yes, ma'am. Say yes or no. Yes, ma'am. अब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देखो, अपनी कॉपी पे आपने ड्रॉ की होगी. इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ. That is your amplitude modulated wave. Yes, Yes, ma'am. it's visible. Yes, ma'am. Okay. Visible. In the positive half cycle of amplitude modulated wave, the diode conducts. Yes, ma'am. Diode conduct करेगा तो आउटपुट आएगी. अभी मैंने वो बताना नहीं है कि क्या कैसे आएगी, क्या है. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. If the value of the amplitude modulated wave is less than this value, अगर वो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आ रही, उससे कम है मेरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, तो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करेगा. Yes, ma'am. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Now see here, that is the circuit of envelope detector. यहाँ पे डायोड है, that act as a rectifier, and here the parallel combination of capacitor and resistor, that is called RC filter circuit. Okay, are you getting my point? Yes, ma'am. Now see here, in the positive half cycle of amplitude wave, the diode conducts. If diode conduct, the capacitor charges. Capacitor charge होना start हो जाएगा to the peak value of amplitude modulated wave. इतनी आउटपुट आ जाएगी. देखो ये फर्स्ट पीक, जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. When the value of amplitude modulated wave is less than this value, जब वो वैल्यू एम्पलीट्यूड की वो कम हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, डायोड विल रिवर्स बायस्ड. Yes, ma'am. जब डायोड रिवर्स बायस्ड में होएगा, कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू रेजिस्टर आर. कैपेसिटर डिस्चार्ज किसके कारण होएगा? थ्रू रेजिस्टर आर इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल. Yes, ma'am.
तो क्या है, when the value of the amplitude modulated wave is greater than the capacitor voltage, the diode conducts. जब फिर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटर डायोड कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड. आपको फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर से आपको पॉजिटिव पीक मिल गई, फिर से डिक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो आपका डायोड भी रिवर्स बायस में चला गया. ओके, दैट इज अ वर्किंग ऑफ इनवेलप डिटेक्टर. कि यहाँ पे जो आपका डिटेक्टर है, डायोड है, detecting element, and second is your filtration circuit, RC filter circuit. That is the working of envelope detector. Now अब कैपेसिटर आप कह रहे हो कि चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, that depends on the component value, कि आप कंपोनेंट की वैल्यू कैसे सेलेक्ट कर रहे हो. Therefore we should select the component value in such a way that the capacitor charges very quickly and discharges very slowly. कि कैपेसिटर चार्ज ज्यादा देर हो मेरा, डिस्चार्ज कम हो. ओके, ओके मैम. as a result we will get the capacitor voltage waveform same as that of envelope of AM wave, that is similar to amplitude modulated wave. आप ये देख सकते हो, ये आपका मैसेज सिग्नल आ रहा है आउटपुट पे. ओके, and that is the standard form of amplitude modulated wave. Okay, Yes, ओके ma'am. मैम. that is a purpose of RC filter, and that diode that is act as a rectifier here. Now any question? नो मैम. You can also ऐसे कब हो हाँ जी, हम ऐसे कब होगा जब चार्ज जल्दी हो कैपेसिटर और डिस्चार्ज में? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल उसे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है तो कैपेसिटर चार्ज होएगा. हाँ जी मैम. ठीक है, जब हम लोअर साइड बैंड की बात करेंगे तो वो नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि आपने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एनवेलप डिटेक्टर, उसकी स्पेसिफिकेशंस कितनी है. सेकंड, one more thing here we can say, when AM input, that is amplitude wave input, is passing through this diode, it will be clipping all the negative half cycle. जब क्योंकि डायोड आपका रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, उसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो पास कर देना, नेगेटिव को करना ही नहीं, क्लिप हो जाना है, रिमूव कर देगा उसे. Means diode will be turned on when it is forward biased, and it will be forward biased only during the positive cycle. During negative half cycle, the diode will be reversed biased. That means no output is there. After this, filtration circuit having a RCA filter, that is the process of charging and discharging of capacitor. अब capacitor charging कैसे हो रही है, जब पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं. डिस्चार्जिंग कब होगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जा रहा है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. Now any question? It's all about the AM demodulators. Today we discussed two types of AM demodulator. First one is square law demodulator and second one is envelope detector. Any question? It's 5 or 10 marks question. Explain the working of square law demodulator and its mathematical calculation also. You have to extract the message signal through AM modulated wave. Okay. 2 marks question. What do you mean by envelope detector? What is the need of RC filter here? Any question? Any one of you can conclude the lecture? What is the comparison between square law demodulator and envelope detector? Any one of you? Yes.
मैम हाँ जी, मैम जो स्क्वायर वेव डीमॉड्यूलेटर है मैम, हमने 2 टाइप्स की है आज एएम डिटेक्शन की. फर्स्ट वन इज स्क्वायर वेव डीमॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज इवैल्व डिटेक्टर. इनवेलप डिटेक्टर. मैम मैम जो स्क्वायर वेव डीमॉड्यूलेटर है वो नॉन लीनियर डिवाइस है हाँ जी. मैम, और जो इवैल्व डिटेक्टर है मैम, उसमें हम डायोड डिटेक्टर यूज करते हैं. Diode here act as a switching element, or we can say work as a act as a rectifier. यस मैम. ठीक है. इन EM मॉड्यूलेटर जो स्विचिंग मॉड्यूलेटर था वहां पे भी आप डायोड यूज कर रहे थे. वहां पे कैसे कंट्रोल होता था? विद द हेल्प ऑफ कैरियर सिग्नल. आपका डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन C of t value is greater than 0. When C of t carrier signal is less than 0, then diode will be reversed biased. यही थी वर्किंग उसमें. That is Yes, the working of AM modulator. तो यहाँ पे क्या है? जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड है. तो पॉजिटिव साइकिल के जब आप दे रहे हो, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल योर डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड. अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, मींस वो कंडक्ट कर रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर रिवर्स बायस्ड में है, मींस नेगेटिव हाफ साइकिल में है, डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड. तो रिवर्स बायस्ड में क्या होगा? No conduction is there. Capacitor discharges, that means no output. और कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज किसके कारण हो रहा है? डायोड. डायोड के कारण हो रहा है. यस मैम. ओके. तो यहाँ पे डायोड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में RC फिल्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. ओके. ओके मैम. एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम. नो. नो. That is most important topic, AM modulators and AM demodulators. If you have any doubt in today's lecture and previous lecture, then ask me.